Weight on new chief's shoulders. Abbas Nasir. Published November 20th, 2022. Dawn Editorial. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. अगले हफ्ते इस वक्त तक जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कौन आएगा? इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा, लेकिन पाकिस्तान की मईशत और इस्तेहकाम पर सवालिया निशान बदस्तूर मौजूद रहेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टीवी प्रोग्रामों, व्लॉग्स और इसी तरह के मवाद की ज्यादा मिकदार मौजूद है, जो ज्यादातर बेखबर, कियास आराइयों के जुमरे में आती है, जिसे तज्जिया और बाखबर बहस, यहाँ तक कि खबरों के तौर पर मंजूर किया गया है। बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन ने कहा है कि वो वजारत दिफा के तहत आने वाले एक दफ्तर में तकर्रुरी के बारे में मीडिया में इतनी ज्यादा कवरेज से बीमार और थक चुके हैं, और उन लोगों को तनकीद का निशाना बनाया है जो इस मामले पर हाइप बना रहे हैं, जब उनके पास रिपोर्ट करने के लिए बहुत कम कुछ भी खबर के काबिल नहीं है। अगरचे कोई भी इन सोशल मीडिया सारिफीन के साथ हमदर्दी का इजहार कर सकता है, लेकिन यह भी इतना ही सच है कि पाकिस्तान की तारीख ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है कि मामलात इतने आसान क्यों नहीं हैं जितना वजारत दिफा के तहत किसी दफ्तर में सिर्फ एक और तकर्रुरी है। जो कोई भी संजीदगी से ऐसा सोचता है, वो अपने खतरे पर ऐसा करता है। जिन लोगों ने पेशा वराना तौर पर अपना काम किया और तनाज़ा में फंसने के बाद चले गए, उन्होंने मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक और हद से ज्यादा सादगी है जिसका ये कॉलम निगार भी कसूरवार है। जो भी चीफ के ओहदे पर मुकर्रर किया जाएगा वो अगले शख्स की तरह ही होगा जो आखिर में ये सब अपने इदारा जाती मुफाद की नुमाइंदगी करते हैं। बाकी सब कुछ सानवी है। ये सिर्फ जुज़वी तौर पर सच है। ये बात दुरुस्त है कि ज़ियाउल हक, मुशर्रफ और हालिया मिसालों की मिसालें भी मौजूद हैं। सरदारों का अपने महसिन लोगों की तरफ रुजू करना जिन्होंने उन्हें ओहदा पर मुकर्रर किया था, और उसका इदारा जाती मुफाद से कोई लेना देना नहीं था, और ये उनके जाती अज़ाइम के सर के नीचे गिर गया। इसके साथ साथ हमारे पास जहांगीर करामत भी मौजूद हैं, जिन्होंने 1990 की दहाई के अवाखिर में नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत सिविलियन हुकूमत के साथ तनाज़ा में उलझने पर मुल्क के सबसे ताकतवर और बावकार ओहदों में से एक को छोड़ने का फैसला किया और चले गए। तकरीबन 1/4 सदी बाद उन्हें अच्छे अल्फाज के साथ याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और दीगर सीनियर माविनीन के इस मशवरे पर अमल करने से इनकार कर दिया था कि वो इस्तीफा न दें और उसके बजाय अपने ओहदे पर बरकरार रहें और वजीर आज़म और उनकी हुकूमत को हल करें। उन्होंने अपने इदारे और खुद से दुरुस्त काम किया। इसके बाद यकीनन वहीद काकड़ थे। कहा जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में सदर गुलाम इसहाक खान को सरजनिश करते हुए शरीफ हुकूमत को बहाल किया, तो उन्होंने नवाज शरीफ को असेंबलियां तहलील करने, नए इंतखाबात की राह हमवार करने और सदर से मुस्ताफी होने पर मजबूर करने के लिए पसपर्दा दबाव डाला। खान साहब ने बदनाम जमाना 8वीं तरमीम के तहत हुकूमत को पैकिंग भेजी थी। नवाज शरीफ के दोबारा ओहदे पर बहाल होने के बाद दोनों आला ओहदों पर फाइज अफराद के दरमियान तनाव पैदा हो गया था और रियासत के मामलात गैर मामूली मफलूज होकर रह गए थे। वो गैर मामूली वक्त था क्योंकि डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने आईन में तब्दीली, 8वीं तरमीम ने मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत के साथ खलवाड़ किया था। उनके इक़दामात दुरुस्त या गलत हो सकते हैं, लेकिन यह वाज़े हो गया कि काकड़ ने ज़ाती फ़ायदे के लिए काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आने वाली वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की तौसी की पेशकश को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया था और मुकर्रर वक्त पर घर चले गए थे। कौमी मुफाद में काम करने वालों के पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात को समझने के लिए किसी गहरी मौरिख की ज़रूरत नहीं होगी, और जिन्होंने दावा किया था कि जब ये बात बिल्कुल वाज़े थी कि वो सिर्फ ज़ाती अज़ाइम से मुतासिर थे, भले ही फौज के इंतहाई मरकजी कमान ढांचे का मतलब चीफ के फैसले के अर्द गिर्द सीनियर कमांडरों का फौरी इत्तेफाक राय ही क्यों ना हो। वाक़यात और हालात का एक इब्तिदाई इल्म आपको बताएगा कि जिन लोगों ने पेशा वराना तौर पर अपना काम किया और किसी तनाज़ा में फंसने के बाद अपेश करदा तौसी से चले गए, उन्होंने मुल्क, इसकी मईशत और इस्तेहकाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फौज का नया कमांडर दो में से एक काम कर सकता है।
वो सिर्फ पेशा मामलात पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं और तारीख और अपने पेशों की ज्यादातर रवायत की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। आबाद डोर संभालने के चंद माह के अंदर अंदर ये सोचकर अपने आप को धोखा दे सकते हैं कि रियासत के मामलात में उनके लिए एक बड़ा किरदार आइन की तरफ से मुकर्रर करदा हुदूद से बाहर कौमी मफाद में होगा। इस बात का यकीन किया जा सकता है कि उनके अर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे, जिनमें आम शहरी भी शामिल हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हौसला अफजाई कर रहे होंगे और उन्हें मुखर जिक्र ऑप्शन की तरफ धकेल रहे होंगे। जैसा कि बदकिस्मती से इन लोगों की एक बड़ी तादाद है जो जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ ताकत के मराकज में कसरत से आते हैं। हम सब महज फानी हैं। यहाँ तक कि आला मखलूकात भी हराम फल के फितने का मुकाबला करने के काबिल नहीं रही है। उम्मीद है कि अगर मेमोरी लेन में जाना और तारीख की ज़ख़ीम किताबें पढ़ना भी बहुत थका देने वाली मशक़ें समझी जाती हैं, बैरूनी ख़तरात और दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ मुल्क का दिफा करने के मुश्किल काम और मुतालिबात को देखते हुए जो एक बार फिर सर उठा रही है, पिछले कुछ सालों की मिसाल इस तरह के किसी भी फितने पर ठंडा पानी डालने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। एक वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ ऐसा करने की तजवीज़ जिसकी मुल्क के अहम मुफादात की ज़रूरत थी और 5 साल बाद किया गया था, को थोड़ा सा समझा जा सकता है, जिसने एक सिलसिलावार रद्द अमल का आगाज़ किया जिसने एक गुमराह मुंतखब ओहदेदार को खा लिया। ये एक भारी नुकसान का तयन करने के लिए जारी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके नतीजे में मुल्क की मईशत खस्ता हाली का शिकार है और सियासी इस्तेहकाम को चंद अफराद के ज़ाती अज़ाइम और ख्वाहिशात का असीर बनाया जा रहा है। कोई सिर्फ ये उम्मीद कर सकता है कि किसी मौके पर जो शर्टलेस भीड़ को पहुंचाने की ज़रूरत है वो भी गौर करने के काबिल होगी। अगर किसी को लोगों को फराहम करने की अपनी सलाहियत का यकीन हो तो किसी को आला ओहदे की तलाश और कबूल करना चाहिए, जिनमें से लाखों गुर्बत की लकीर से नीचे मौजूद हैं, जिनके बच्चों के पास ना तो काफ़ी खुराक है और ना ही तालीम, निस्फ मुहज़्ज़ब सेहत की देखभाल के निज़ाम तक रसाई तो दूर की बात है, बसूरत दीगर कोई फ़ायदा नहीं है। बैंड बाजा, धूमधाम और शो इसके काबिल नहीं है। Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. By this time next week, the question of who will succeed Gen Qamar Javed Bajwa as the Chief of Army Staff will have been answered in all likelihood, but the question marks over Pakistan's economy and stability will continue to loom large. There can be no denying there has been an overdose of TV programs, vlogs, and similar content on social media platforms, mostly falling in the uninformed, speculative category, which has been passed off as analysis and informed debate, even news. Many social media users have said they were sick and tired of so much coverage in the media on an appointment to an office falling under the Ministry of Defense, and slammed those creating a hype over the matter when they had little or anything newsworthy to report. While one can sympathize with these social media users, it is equally true that Pakistan's history is replete with examples of why things are not as simple as this being just another appointment to an office under the Defense Ministry. Anyone seriously thinking so, does so at their own peril. Those who did their job professionally and walked away after being drawn into a controversy did no harm to the country. There is another oversimplification that this columnist is also guilty of. Whosoever is appointed to the chief's office will be the same as the next person who qualifies as, in the end, all of them represent their institutional interest. All else is secondary. That is only partially true. Admittedly, there are the examples of Zia-ul-Haq, Musharraf and more recent ones too, of chiefs turning on their benefactors or those who appointed them to office. And this had little to do with institutional interest and fell squarely under the head of their personal ambition. At the same time, we have also had Jahangir Karamat, who decided to leave one of the most potent and coveted offices in the country and walk away when he got entangled in a controversy with the civilian government headed by Nawaz Sharif in the late 1990s. He is remembered with nice words, nearly a quarter of a century later, for refusing to heed the advice of his Chief of General Staff and other senior aides not to resign, and instead, to stay in the job and sort out the Prime Minister and his government.
He did right by his institution and by himself. Then, of course, there was Wahid Kakar. He is said to have used behind-the-scenes pressure to get Nawaz Sharif to dissolve the assemblies, paving the way for fresh elections and get the president to resign, when the Supreme Court restored the Sharif government in a rebuff to President Ghulam Ishaq Khan in 1993. Mr. Khan had sent the government packing under the infamous Eighth Amendment. After Mr. Sharif was restored to office, the two holders of high office were locked in a tense standoff and the affairs of the state were suffering from an unprecedented paralysis. Those were unusual times, as the dictator Zia-ul-Haq added aberration to the constitution. The Eighth Amendment had played havoc with parliamentary democracy in the country. Right or wrong his actions may have been, but it became clear Kakar did not act for personal gain, as he bluntly refused the incoming Prime Minister Benazir Bhutto's offer of an extension and went home on schedule. One would not need to be a keen historian to understand the impact on Pakistan of those who acted in the national interest, and those who claimed they were when it was abundantly clear they were motivated solely by personal ambition, even if the highly centralized command structure of the military meant a quick consensus of the senior commanders around the chief's decision. A rudimentary knowledge of events and circumstances will tell you that those who did their job professionally and walked away after being drawn into a controversy or from offered extensions did no harm to the country, its economy, and stability. The new commander of the army can do one of two things. He can focus on professional matters alone and defy history and most of his predecessors' tradition, or within a few months of taking over the reins, can delude himself by thinking that a larger role for him in the affairs of the state, beyond the boundaries drawn by the Constitution, would be in the national interest. One can be sure there will many around him, civilians included, who will be gradually goading him and nudging him towards the latter option, as is, tragically, the wont of a sizable number of those who frequent the various power centers in the twin cities of Rawalpindi and Islamabad. All of us are mere mortals. Even higher beings have not been able to resist the temptation of the forbidden fruit. Hopefully, even if going down memory lane and reading voluminous history books are exercises considered too tedious, given the onerous task and demands of defending the country against external threats and scourge of terrorism that seems to be rearing its head again, the example of the past few years ought to be enough for pouring cold water on any such temptation. The proposal of a prime minister to do something which the country's vital interests warranted, and was done 5 years later, may have been considered a slight which set off a chain reaction that devoured the errant elected official. It continues to exact a heavy toll. There can be no denying that, as a result, the country's economy is in a shambles, and political stability is being held captive to the personal ambitions and whims of a few individuals. One can only hope that at some point what needs to be delivered to the shirtless multitudes will also merit a consideration. One should seek and accept high office if sure of one's own ability to deliver to the people, millions of whom exist below the poverty line, whose children have neither enough food nor education, let alone access to a halfway decent healthcare system. Otherwise, there is no point. The bandbaha, pomp and show, is not worth it. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share.